हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप एडीएफ 2020-21 के बारे में। दोस्तों, इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। तो यहाँ पे जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि टू प्रमोट रिसर्च कल्चर एंड एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, टू प्रमोट collaborative research between institute and industries leading to startup, and to nurture talent for technical research. These are the broad trust areas for research, and the most important, that is your eligibility criteria for the award of the fellowship. दोस्तों, this is a very important. तो फर्स्ट कंडीशन लिखी है, फर्स्ट क्राइटेरिया लिखा है कि द फेलोशिप या स्लैश एच आर है या कॉन्टीजेंसी विल बी ग्रांटेड टू रिसर्च स्कॉलर्स एडमिटेड in the technical universities in the identified trust area of the ADF scheme. तो यहाँ साथ से मेंशन कर दिया ट्रस्ट एरिया, that is a of ADF scheme. And second is the technical university will be admit candidates in their research program as per their procedure following minimum eligibility criteria as per prescribed by AICT. And the third is the candidate must have secured minimum cumulative grade point average CGP of 7.5 of the scale of 10 या equivalent, both bachelors and masters. In the additions to above, the students should have qualified GATE/GPAT/NET during the last 5 years. दोस्तों, last 5 year. For SC, ST and PH candidates, CGPA requirement will be 7.0 on the scale of 10 और 70% मार्क्स और इक्विलेंट। आगे दोस्तों देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन है। द कैंडिडेट शुड बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इन रिस्पेक्टिव टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, एंड हाउएवर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years would be applicable to the candidates belonging to SC, ST, women's and physically challenged category in succession. तो ये दीज आर द क्या है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ द फेलोशिप। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ थी ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम की बात करते हैं तो द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड फर्दर 1 year extension, that is your in 2 slots of 6 months each, may be given by AICT on the recommendation of the respective technical university based upon the performance of the scholar in the research work. एंड व्हाट आर द अमाउंट ऑफ फेलोशिप, यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि द फेलोशिप विल बी 31,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years एंड फॉलोड बाय द 35,000 पर मंथ ऑफ द थर्ड ईयर, 31,000 फॉर फर्स्ट 2 years and 35,000 for the third year. HRA will be provided at the rate of 8%, 16%, 24% as per the Government of India norms as applicable in the city locations where the research fellows is pursuing their research and are not provided any hostel accommodation in the institute. In addition, contingency grant will be admission to the scholar at the rate of 15,000 rupees per annum to meet the miscellaneous expenditure. So this is the information of amount of fellowship and number of fellowship. Maximum 300 numbers of fellowship may be granted in a year, and number of candidates per technical university would be between 5 to 18 subject to the availability of seats in research center and demand of a research center by candidate. The technical university wise number of seats is enclosed in annexure A, जो कि हम आगे देखेंगे. What are the role and responsibility of the technical universities? These are the 5 points. Then this में technical university will assign one faculty as a nodal officer for the scheme, who will act as the interface between the technical university and AICT on the various operational aspect of a scheme. Second, technical university will select candidates for the fellowship as per laid down criteria. And the third one, this is the technical university will be update joining report for the scholar on this online portal of the AICT along with bank account details, with subsequently monthly attendance of the enrolled scholars through online portal for the disreimbursed of the fellowship directly from the scholars account. And the next fourth,
That is, Technical University will ensure that its scholars must be registered in the PhD program within 1 year of start of fellowship after completion in the mandatory coursework etc, following which fellowship will be discontinued. Annual progress reports of the enrolled scholar will be submitted online to AICT for the monitoring purpose. एंड व्हाट द क्राइटेरिया फॉर कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड, इसमें आप देख सकते हैं साफ से मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन पीएचडी विल नॉट विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मिसकंडक्ट, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, he she is the found is the ineligible letter, and any false information furnished by the applicant by the any fraudulent activity in this by the scholar, and slash fellow research awarded shall be led to the panel action awards against him or. And the last point, the fellowship may be terminated any time during the tenure, and the decision of the AICT will be final and binding. And these are the terms and conditions. And यहाँ में आप देख सकते हैं लीव्स की इंफॉर्मेशन दी गई कि fellows are indicted for maximum period of first, that is 15 casual leaves and 30 medical leaves in a year, and there are not any other holiday. Candidates were eligible for maternity, paternity leave, and GI norms reduced the teaching assistant workload. Teaching assistant of not more than 8 hours / week may be given to the scholars under going full-time PhD program under AICTE ADF scheme, and may be included assistance in a lab classes, tutorials, etc. These are the annexure जो कि एफिलेटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाइज सीट लोकेशन बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपी आंध्र प्रदेश के लिए जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें 8 सीट है, और सेकंड जो है दूसरी ब्रांच उसके लिए 8 सीट है। असम में असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 सीट है। बिहार के लिए आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पटना 10, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी 10, दिल्ली गुरु गोविंद सिंह एंड नेताजी सुभाष आदित्य 5 और 6, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 15, गुरु जिमेश्वर एंड JC बोस 6 and 7। हिमाचल प्रदेश में बात करें, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 10, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची 5, कर्नाटका 10, केरला APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम दैट इज़ योर 10, मध्य प्रदेश राजीव गांधी 10, and Maharashtra में there are the various colleges, डॉक्टर बाबा साहब सावित्री, डॉक्टर साहब बाबा साहब संत इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, स्वामी रामानंद जी मुंबई यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी। उड़ीसा में आप देख सकते हैं पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, एंड उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी 18 number of seats, and West Bengal. So these are the information of PhD admission regarding guidelines for AICTE doctoral fellowship ADF. Thanks for watching.